You 27 people in the waiting room. Why are these guys auto-muted? Let's change the settings. Hello guys, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल भाई लोग? Hi sir, good. हेलो. सब परमिशन हटा दो भाई, नहीं तो ये लोग स्क्रीन पे लिखने लग जाते हैं. एक सेकंड. नहीं नहीं, एक सेकंड. Let me just set a few things. यार यहाँ पे इसको ना नेम के साथ से होना चाहिए. राम 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 राम. वेलकम वेलकम एवरीबॉडी. All yours. It's the most. But everybody is not muted. Everybody is Not muted. yeah muted. अच्छा. Mute. Exactly. No. You want everyone to be muted? Then? Yeah. I'll unmute them by myself now. Hi guys, we'll wait for 5 more minutes ताकि सब लोग join हो जाए. तब तक आप सब अपना अगर कैमरा खोल दोगे, it'll be better because I will be able to communicate well. I can then unmute you guys also. क्योंकि आज we are going to have like a mindset session more on, कि आप लोग अपना best, how can you perform better? And अगर आपका cameras open रहेगा, I can individually talk to you if there's a problem you guys are facing in your trading, or if there's a problem that you're facing just in general. तो आप सब अपना camera खोलिए. I'll just take 5 more minutes and then we'll start. Can I get a thumbs up or like a yes in the chat? If you guys could hear whatever I was saying, just drop in like a yes in the chat and we'll quickly start in like 5 minutes. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. Guys, if you can please bring a notebook and a pen or a pencil,
that'll be great, because we'll do like a lot of writing, a lot of clearing and everything. और अगर आप अपना videos switch on कर सकते हो, it'll be better. So that way I can talk to you guys. That way I can see how you guys are doing, what you guys are feeling. Because हम बहुत थोड़े activities करेंगे, which will require me to see what आप लोग क्या कर रहे हो. And we'll just start in 2 more minutes. So until then, please bring like a book. अगर आपको पानी वानी चाहिए अपने पास रख लो. If you have a pen, pencil. Pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. I moved to the city and I broke down crying. Okay, guys, शुरू करते हैं. So, hello everybody. My name is Arnav. I am a mindset coach. I'm a performance trainer. I help people perform in their best version. मैं लोगों को help करता हूँ mentally and physically that they perform their best, because आजकल if आप लोग mentally you're not strong, you know, in physical world, in real world, you cannot do a lot of things, right? अगर if you see the top of the top people, let it be Michael Jordan, let it be, you know, any Virat Kohli, let it be Dhoni, all of these guys have a good mindset, right? And I'm pretty sure Siddhant's channel and Siddhant himself has been talking a lot about psychology, right? So a lot of things go into play, because psychology में खाली ये नहीं रहता है कि, you know, अगर आप अपने mind को शांत कर दोगे तो आपको answers आ जाएंगे, right? जैसे अगर आप खाली meditation कर लोगे तो आपको answers आ जाएंगे. There are a lot of things that you have to, you know, deal. You have to deal with yourself. You have to deal with those thoughts जो आप जो ignore करते हो. जब every morning you get in front of your computer, you are there to trade, और आप सोच रहे हो कल ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये हो गया था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये हो गया था, मेरे फैमिली में ये हो गया था, मेरे को खाना अच्छा नहीं मिला, right? All these random thoughts आपके दिमाग में चलते रहते हैं, and then it just spoils your present moment, right? So not only with your mindset, but I will show you how you can deal with a lot of your problems, right? तो अगर आप सबके पास अपनी book और pencil आपके सामने है, I want you to write down your top 3 problems. आपके top 3 problem आप अभी currently जो face कर रहे हो. Not just in your trading, but in your life. It could be anything. You don't have to share it with anybody. It should be there in your book. It could be a problem that you're facing with your health. It could be a problem आप अपने family के साथ face कर रहे हो, with your loved ones, with the friends around you, your confidence. Could be anything. 3 major problems right now. कुछ भी हो सकता है वो. Just be true to yourself. अपने आप को झूठ नहीं बोलना, because जो भी आप लिखोगे eventually will I and majorly yourself can help yourself get over all these problems. And for all those people who haven't yet opened their cameras, आप अपने अगर cameras खोलोगे, it will be better. I can see you. मैं आपसे बात कर सकता हूँ. And I can just call you on stage and help you solve any of your problems. It could be anything. So once you've written down your 3 problems, I just want like a hell yeah in the chat. Just give me like a hell yes in the chat if you've done writing your problems. We'll just wait for a minute more and just write down 3 of your problems. Any 3 problems you are currently face कर रहे हो. And I'll help you solve those problems. And most importantly, I'll help you
yourself solve those problems. क्योंकि I believe अगर एक problem रहती है उसका solution भी रहता है, right? Every problem has a solution. Humanity, I believe, is there since a million years, but since the last 5,000 years, it's been recorded. So there is no new problem that you are facing. Correct? हर problem का solution और हर problem that आप गुजर रहे हो, कोई ना कोई उससे already गुजर गया है. That's why today we have books that we read about people. You know, like The Alchemist. Even though it could be fictional, but The Alchemist solves the problem. Rich Dad, Poor Dad. It solves the problem, right? So, दुनिया में ऐसी कोई भी problem नहीं है that you cannot solve, right? It comes out in a form of a podcast. It comes out in a form of a movie. It comes out in a form of a book. And जिनके भी cameras खुले, if I can get a thumbs up, I know I can just begin, right? So if you guys have written your problems, just give me like a big thumbs up. Perfect, great. तो अब आप लोग imagine कीजिए, right? We talk a lot about psychology, mindset, but people forget हमारी body का एक बड़ा component, which is called the physiology. Physiology is your body, your outer body, your face, your hands. If you see the world's great storytellers, they have a good hand movement, right? Have you ever seen somebody who's a great storyteller talk to you like this? Hi guys, whatever. No, right? Because it's very boring. We use our hands, we use our facial expressions, क्या हो रहा है, right? तो अगर अब ये मैं आपको एक example देता हूँ. I just want you to open your chat because let's see आप क्या सोचते हो. If there is a curtain in front of you and behind the curtain is a person, right? And if I open the curtain and I tell you it's a depressed man or a girl sitting over there, उनकी body कैसी रहेगी? Will she have like a dull face? या उनकी body ऐसे एकदम slouched over रहती है? Rajshekhar tells dull face, correct? उनकी tonality, how is their tonality? Yeah, they are weak, sorry. They are sleepy, they are low, correct? Can you talk about how their facial expression is like? Lack of interest. Correct. Are they sitting up straight or are they slouched over? They're slouching. Will look like Rahul Gandhi. Okay. Rahul Gandhi seems to be like a very happy man, guys. Doesn't seem depressed at all. Lack of energy, correct. Energy is like, you know, everybody radiates an aura. Everybody, sab ka bolne, aapke, the way you talk, malum pad jata hai if somebody is depressed or no, correct? Now, let's take the second option. If on the same curtain, I open the curtain and there's this guy who's super, you know, like, is happy. So, unka, what are the characteristics that the person will have? He's smiling and confident. Okay. How is he sitting? How is his facial structure? Manav, can you show me by your face how his facial structure would be if he's a happy man? Yeah, he's showing his teeth, correct? He's confident, active person. Face will grow, confident, body language will be very good, correct? So guys, what does this say about the person? You know, even before your psychology, if I tell you, if you're sitting straight, sit straight, put your shoulders back, your chest up, take a deep breath, just one breath. Let it out through your mouth. And just give me a smile. Show me your teeth. Just show me your teeth and just sit up straight. Are you feeling better than you were feeling just a few seconds ago? If yes, give me a thumbs up. Correct? So now, have you ever seen those people जो सुबह garden में हंसते रहते हैं? 40-50-year-old women, uncles, right? And we think ये लोग क्या कर रहे हैं? कितने पागल लोग होंगे? सुबह ऐसे उठ के कौन हंसता है? Imagine you just gave a smile and your whole mood changed in a second. Imagine just laughing for 2 minutes without any reason. You know, उदास होने के लिए आजकल reasons नहीं चाहिए होता है. It's the same with sad, right? आजकल तो लोग सुबह उठते हैं बोलते हैं, oh shit, I woke up. कितना बेकार दिन होने वाला है. But have you ever said this to yourself? Oh shit, today's going to be a crazy day. Right? All these things, because your mind and your body and your soul is always listening. तो आप अपने आप को जो बोलते हो,
the way your physiology is, physiology as in, are you sitting straight? Are your shoulders back? Are you breathing slow? This happened with me. Correct, Anirudh, you're right. Just with a smile. If I tell you to smile again, 3, 2, 1, give me a big smile. Even if you don't feel like it. Even if it feels like the most absurd thing you're doing today. ये trading से related नहीं होगा. But that smile will just put you in the mood to learn. आपको ये mood में डालेगा और चीजें करने के लिए. Right? If you feel a difference, give me a big thumbs up. Right? So the 3 problems that you've written, if you guys have written, and for those who have not, आप लोग अपने 3 problems लिखिए which you are dealing in your life right now, जो आपके साथ अभी life में हो रहा है, and I will help you solve those problems. Amazing. So guys, next thing, confidence. यहाँ पे confidence किन लोगों का कम है? If it's less, just drop it in the chat, yes. If your webcam is on, just give me like 1 thumbs up. Right? It could be confidence in yourself. It could be confidence in trading. It could be confidence in any area of your life. Right? Because end of the day, the way you move is how you think about yourself. Agar aap sochege you are the shit, you will be the shit. Agar if you think, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. Right? Who here believes you are what you think? Give me a thumbs up. Who here thinks जो भी हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में वही डिक्टेट होता है? Give me a thumbs up. Who here thinks कि जो हम अपने आप को खुद बोलते हैं हम वो बन जाते हैं? Give me a thumbs up. So if all of this is true, why do we still talk back to ourselves? हाँ, हम खुद को क्यों बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं? Even though deep in your heart सबको पता है आप कर सकते हो. Right? So ये ऐसी चीज नहीं है कि I wake up every day and I feel good. Everybody has their low days, right? On the lowest day, what am I telling to myself? कि अर्नव, छी, क्यों उठ गया तू? कुछ भी नहीं कर सकता है. Look at your hair, look at your face, look at the shirt you're wearing. Or can I tell, oh my God, I look good. Oh my God, I feel great. Yes, no. सब इतने sad face बना के बैठे हो. Hello guys, wake up. We are not doing like a teacher training. ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे I'm talking to you guys, trying to help you guys. The problem why everyone sits this way is because of our schooling system. अगर आप कभी क्या, of course आप I think सभी स्कूल से पास हुए होंगे, but स्कूल में अगर जब टीचर पढ़ाती है हम सब कैसे बैठते हैं? Is everybody at the school being like, I can answer, or everybody is quiet, this hands on the lip, सुनो टीचर क्या बोल रही है, you cannot ask questions. If you think it's hand on the lips, please put your hands on the lips, and if you think it's not, please jump around. Quiet. Correct, exactly. Negative self-talk. Right? So we've been trained, to sit quiet, to listen. उसमें हमारी physiology is closed. You're like a depressed kid trying to learn something. And if you're sad, if your body is ऐसा closed, आप क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं. Then you're memorizing things. You're not learning things. But if you're just there, open, breathing good, smiling, talking back, writing down things. Because let me tell you, आप लोगों ने बहुत motivation सीखा होगा, सुना होगा, but 2-3 days के बाद you're just like, क्या था वो? Right? So one reason why I tell you to take a book is so that you can write down these points. Whenever you have a negative self-talk, boom, change it, be positive. Everybody thinks this, being positive is like this pseudoscience, toxic positivity. Imagine agar aaj ke generation mein you tell a person ki being positive is toxic, kya hi hone wala hai? Right? So please keep writing things down because all these things will, try to help you. Okay. So now let me give you a question and we'll just pick somebody from the
video to, who I could talk to. So write down 3 things that you love the most. वो 3 चीजें ऐसे सोचो जिस तुमको सोचते ही ऐसे लगता है ओ माय गॉड मजा आ गया. Or that you're grateful about. Okay, wow, this exists. Mother, friends, family. 3 things that you love. Three things that you love. If you're done with writing it down, please drop a woohoo. Mom, friends, family, gym, dog, friends. We have a gym boy in this room, huh? Great. And for the people who've switched on the cameras, can I get a thumbs up if you've done writing the 3 things that you love? Can I pick somebody and ask them? If you want to be picked, can you just raise your hands? Let's go to Sudhir. Hey, hi. Hi, Sudhir. How are you doing? I'm good. How are you? I'm great, man. किधर से हो? मैं राजस्थान से हूँ वैसे, but we live in कोलकाता. Nice, nice. तो आपने 3 चीजें क्या लिखी है? मैंने लिखा है राइटिंग, मुझे लिखने का शौक है, पोएट्री सॉन्ग्स लिखता हूँ. Okay, wow. प्लेइंग क्रिकेट. एंड बिसाइड्स दैट वैसे खाना अच्छा कुछ खाना खाऊं तो बड़ा अच्छा लगता है, और या प्लेइंग विद माय नीस एक्चुअली. That's वो so, है नंबर 3. है ना? लाइफ अगर ये 3 चीजें मिल जाए तो लाइफ की पूरी प्रॉब्लम्स चले जाती है ना. सुकून है. सुकून है. हाँ जी. चलो, good talking to you, Sudhir. I'll take someone else now, okay? Yeah, yes sir. Thank you. Anybody else? Please raise your hands. Chirag. Hi, Chirag. Hi sir, Jai Shri Ram. जय श्री राम बड़ी. आपने क्या लिखा? Mom, Dad, Food and Power. Mom, Dad, Food and Power. देखो, फूड आई थिंक सबका कॉमन रहता ही है, राइट? एंड फैमिली ऑल्सो. हाँ. आप कहाँ से हो, चिराग? मैं मुंबई भाईंदर और नाइस, एग्जैक्ट में राजस्थान. वेरी नाइस. चलो, आई म्यूट यू, चिराग. थैंक यू सो मच. So guys, I think majority of them, have written family, food, dog, friends, but a lot of them forget ourselves. And imagine living in this body. I am 26 now, to 26 years of my life, and probably more, 50, 60. But here, if you see, nobody has written me, myself. If you have written me, just raise your hands and just write down there. Kaushik did, Shubham did, right? Let me tell you a nice story, ठीक है? आप लोग कभी फ्लाइट से गए हो? Have you traveled in a flight? If yes, give me a thumbs up. And in the chat, just drop a yes. तो जब भी आप, whenever you go through a flight, वहाँ पे एक खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट रहती है, right? And before the flight starts, सबकी आंख उन पे ही रहती है कि oh my god, what's happening? और वो फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है whatever she says, left, right, whatever. But what is more important is when she tells, in case of emergency, अगर कुछ इमरजेंसी आती है, आपके ऊपर से एक ऑक्सीजन मास्क आएगा, right? In case of emergency, use the oxygen mask first, then help the person on your left or the right. Even if they are your grandmom, your parents, or your food, right? Because क्या होता है in an emergency, if you don't use the oxygen mask on yourself, और अगर आप किसी और की हेल्प करने जाते हो, there are chances that while you're helping them, you will faint, right? अगर वो ऑक्सीजन मास्क आप पहले ले लेते हो, then you're ready to go, right? Because there's oxygen, you are safe. And when you're safe, your mind is working, and then you can help others, right? अगर आपका एक ग्लास फुल नहीं है, अगर आप ही सेफ नहीं हो, how will you help others? If imagine Superman didn't have superpowers और वो लोगों की हेल्प करने जा रहा है, right? Superman's power is in him, right? अगर वो खुद को, if he's not training or if he's not there,
where he's supposed to be mentally, he cannot do anything. Same with you guys, right? As human nature, हमारा this is more important, you know, we go help others. हमारी खुशी दूसरों की खुशी में है. फिर हम घर आके एक पिल्लो पकड़ के रोलेंगे, चलेगा. But we don't realize the happiness that we give can only be created with the happiness that we have. Right? Try putting yourself first. It's okay. You know, the world is a good place. हम सोचते हैं दुनिया एकदम सी है. But again, it's जो आप सोचोगे आपको वो ही मिलेगा. You are what you believe. If you believe the world is a bad place, it will be a bad place. Does me time count as loving myself? Of course. Of course. Everything that you do, eating, all this, going out for a movie, going to places even when your friends don't want to go there, you're choosing yourself. You know, at the time we've always, you know, एक room में कोई आता है, he's very sad. हम हमारी energy अगर सोचो इतनी हम उनको equal down करने के लिए अपनी energy नीचे ला लेते हैं. Right? We try to empathize with them. अरे बेचारी क्या हो गया? But have you ever thought कि increase your energy? Try to help them increase their energy instead of you falling down. Am I making sense? If yes, give me a thumbs up. If no, like give me a bleh. समझ में नहीं आ रहा. Right? So whenever you're in a room, try to bring your energies up, guys. You have this one life. एक ही जिंदगी में भी रोने लोगों के साथ रोगे ना, कहाँ ही पहुंचोगे. Right? Everybody has something that they want to do. Everybody has something that they can do. But they don't understand, you know, instead of getting sad, can we get more happier? Right? And our brain is such a thing, हम उनको जो बोलेंगे वो ही करेगा. Right? अगर आपको कोई कहीं जाना है, for example, from your house you want to go to a salon, you just don't go there. Mentally आप पहले decide करते हो. मतलब even though it's very involuntary, पर आपके पहले दिमाग में ये डालते हो कि मेरे को सैलून जाना है. फिर आपका दिमाग पूछता है कौन से. फिर आप सोचते हो या तो जो सबसे पास है या जो सबसे सस्ता है. Right? Then you go. Right? So everything that you do, you very unconsciously ask yourself. खुद को पूछते हो सुबह उठते ब्रेकफास्ट क्या करूं. Right? Nobody gets up and goes like, chalo breakfast मैं कर रहा हूं. So the question you ask, the things that you talk about yourself is very important. Right? With this comes one more thing, is always listen to your coach. Either football, cricket, कौन देखता है? Give me a thumbs up. Or any other sports. Right? When Ronaldo is playing his match, I hope everybody knows who Cristiano Ronaldo is. When he's playing a match, do you think he goes on the field and does what he wants to do? Or does he perform and sits with his coach and strategize क्या होना है? So, I like that G. है ना? वो जो भी कोच के साथ प्लान करता है वो ही जाके करता है. No matter what he wants to do. Because जब Cristiano Ronaldo is in the field, he can only see what he can see. But outside the pitch, उसका कोच देख रहा है कि गोलकीपर क्या कर रहा है, डिफेंडर क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. He has the trust in the coach. हारे जीते is very secondary. But what is important? Is he trusting the coach? जो वो कोच बोल रहा है वो ही कर रहा है. Because without a coach, no team is great. Am I right? Without a teacher, no student can learn. Right? तो जब भी आप, not only with Siddhant, right? जब भी आप, let's talk about Siddhant, since you guys are here because of Siddhant. Since you're doing this course, how many of you are giving you 100%? Raise your hands and be true. 100%. 100 मतलब आप कुछ भूल ही नहीं रहे हो. You are very focused. You're listening. If he gives homeworks, do you give homeworks? Do you guys should do your homeworks? Are you there on every live video? Are you watching all the videos that he's been sending you guys? झूठ मत बोलो. See, if you're telling lies, you'll be telling lies to yourself, not to me. Right? Because this man right here understands something. Right?
And if you know, all he wants from you is trust. And when you trust somebody, you're very open to listening. Right? अगर रोनाल्डो फुटबॉल खेलने जाता है, उसका कोच की वो नहीं सुनेगा, he'll mess up the whole match. कोहली ले लो, कोई भी ले लो, any sport, Michael Jordan also. There's a team play and there's a strategy. If you don't, you know, apply that strategy in the way you've been told to apply it, there are higher chances of you to, you know, miss those markers, miss those goal, miss that sixer. Kabhi kabhi, you know, like by chance, if you're playing your own game, ho jata hai. But then who is to blame, right? Agar if thing goes down, thing goes up. खुद के, like, you know, always try to see ये coach क्यों बोल रहा है ऐसा? Why is Siddhant telling this? Why is Arnav telling this? Or why is anybody telling this? Whoever you listen to, आप जिनकी भी books पढ़ते हो, what is happening? सोचो क्यों? अच्छा, he's gone through this journey. He knows something that I don't. Right? Always, हमेशा be that person in the room जिसको कुछ नहीं आता. क्योंकि उससे आप सुनोगे दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं. ऐसा नहीं कि, you know, आप खुद को आप नीचे दिखा रहे हो. It's just that be quiet, listen. कहीं उधर उधर, you know, you get something, you learn more. When your chance comes, be a master orator. ऐसे बोलो कि सब भी चुप रह जाए. Who knows Divine over here? The rapper Divine. Who knows Ambani over here? अंबानी सबको पता है. Who knows? और कौन है? सिद्धू मूसेवाला. Right? So let's talk about Divine. Divine comes from a slum. And look at him today. Do you think he had the money? Do you think he had that silver spoon? कोई recording label आके उसको बोल दिया बेटा तू आजा, I'll make you the next superstar. पर हम, we are so privileged that, you know, we at least have a device that you and I can talk to. Yet still we think, अरे काश मेरे पास वो होता तो मैं ये बन जाता. If I had the iPhone, I would become that. If I had a iPad, मेरा ये हो जाता. अगर मेरे पास एक बड़ा स्क्रीन रहता, I would be a better trader. Ghanshyam sir, I think, was a farmer, right? Imagine a farmer being one of the India's best traders. वो रो रहा था, उसके पास Apple products नहीं है, उनके पास electricity, AC नहीं है. Or was he just doing it? Right? So it is not about resources. आपके पास कितने पैसे हैं, कितने equipments है, एक छोटा सा phone है या एक बड़ा सा screen है, कुछ matter नहीं करता. It's about being resourceful. इंडिया में बोलते हैं ना जुगाड़ू. आप अपना काम कैसे निकालते हो? पुलिस पकड़ती है तो आप अपना काम कैसे निकालते हो? Do you go to the courtroom or do you give him, ये लो भैया 50 रुपए छोड़ दो. वो 50 से भी नहीं मांगता, 200 रुपए दे दोगे. वो 200 से भी नहीं मांगेगा, 1000 दे दोगे. But आप कोर्ट रूम कभी नहीं जाओगे. That is called resourcefulness. Even though it's illegal, I don't tell you to do those things, but just get the point. Right? If you see आज के जमाने के the richest of the richest, everybody comes from the slum. Nobody not probably 10% लोग आते होंगे from privileges, but the other 90% comes from the slum. They had just one vision, to make it in life. Are you those guys who will make it in life? Give me a thumbs up. ये क्या ढीला सा thumbs up क्या है? अमीर बनना है नहीं बनना है? हेलो गाइस, फिजियोलॉजी, एनर्जी, हाँ सर बन जाएंगे कल परसों. ये क्या होता है? टाइम इज टिकिंग. हेलो, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी above 22 years of age. इधर कब अमीर बनना है, कब गाड़ियां वाड़ियां खरीदनी है, घर वर खरीदने हैं, ऐसे ही हाँ कल ले लेंगे. एनर्जी लाओ. When you wake up for trading tomorrow, do you wake up like हाँ चलो आज प्रॉफिट कमाते हैं? क्या you like BC प्रॉफिट कमाना है आज? कुछ तो उखाड़ना है. Am I right, Anirudh, Sony?
है ना? That energy I want. Smile, guys. कितना भी बुरा हो तो जिंदगी, you will always have something to smile about. मैं यहाँ पे ऐसे भाषण थोड़ी ना दे रहा हूँ कि बस हाँ सुनो निकाल दो. I'm trying to tell you these little things that'll help you, you know, थोड़ा get up. Because हमारी लाइफ ही ऐसी डिजाइंड है कि आप जाओ, स्कूल जाओ, लोन लेके फिर वापस बाहर जाके पढ़ो, फिर वो लोन चुकाने के लिए काम करो, फिर शादी करो, फिर वो शादी में थोड़े बच्चों को सिखाने के लिए फिर लोन लो. पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी. And you will never reach your potential. The Matrix. Top G fans I see. Right? किसको फंसना है ये पूरे सिस्टम में? The rich is getting richer, the poor is getting poorer. Am I right? Yes, no. Why is the rich getting richer? Because he knows कि अगर हम जिंदगी ऐसे बिताएंगे ना एकदम, हाँ अर्नव तू जो भी बोल रहा है सही है, नहीं बढ़ेगा आगे. Are you with the right people? आपकी सराउंडिंग कैसी है? Do you have good friends? Do you have average friends? Do you have friends who keep crying? क्योंकि आपके दोस्त, if you have 4 friends, अगर वो पूरे रोते हैं, you will be the 5th who is also crying. आपकी सराउंडिंग कैसी है? Because at this age, your surrounding is your friends, right? If you're working, your surroundings is your work friends. Are those guys dreaming big like you are? And I believe you're big dreamers, otherwise you wouldn't be in this session. Right? आप लोगों को लगता है आप कुछ कर सकते हो इसलिए आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो. But your friends over there will tell, अरे मैं इस पैसे का तो अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं लेके चले जाता, इस पैसे का मैं ये कपड़े खरीद लेता, ये ट्रैवल कर लेता. But these guys don't understand it takes money to make money. These guys don't understand that it takes a big dreamer to be over there. Dream और reality के बीच में इतना difference नहीं है, बस इतना ही difference है. This small, this much. And that thing is created between these 2 ears, which is your head. Yes? No? Now I see Manav and Samrat getting, otherwise ये दोनों तो ऐसे कर रहे थे, हाँ हो जाएगा भाई, जल्दी बोल, next कुछ और बता. Chalo, let's do one thing. Let's do a small let's see how strong your mind is. Agar all of you can just stand up, it'll be great. Just push your camera a little. खड़ जाओ सबके सब. और जो भी ऑन कर रहा है मुंह धो के आओ. Once you're खड़ गए तो just see if you have like 1 arm of distance in front of you and on the side. Now अपने दोनों हाथ आगे रखो and turn towards your right as much as you can. बस right, don't move around, खाली right. बस अब आगे आ जाओ. Now I want you to keep your hands down. Close your eyes. Just listen, look straight. Take a deep breath. Exhale through your mouth. Now I want you to imagine कि आप लोग एक रबर, आपकी बॉडी एक रबर बन गई है. And then your body is पूरा ऐसा घूम रहा है 365. Just imagine it in your head. आपकी बॉडी एकदम ऐसी 365 डिग्रीज घूम रही है. और आपकी आईज बंद रख के अपने दोनों हाथ आगे करो. Now imagine, आईज बंद रख के, don't move, just imagine in your head, आपका पूरा हाथ राइट से पीछे की तरफ मुड़ रहा है. Imagine पूरा घूम रहा है एकदम रबर जैसा. वो फैंटास्टिक फोर में एक रबर रहता है ना, रबर मैन, I don't know what his name is. वो पूरा घूम रहा है. Oh, it's the girl. Now I want you to open your eyes and turn right as much as you can. As much as you can. And once you're done, please take a seat. How many of you could turn more the second time? If yes, give me like a thumbs up. On the chat, drop me a yes.
Yes, 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 yes. पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि your mind was not ready. You didn't tell your mind कि अर्नव मेरे को ये अचीव करना है. Have you guys heard about visualization? If yes, give me like a thumbs up. In the chat, drop me a yes. Blockage, correct. You know, the top of the top athletes use visualization. There was a study done. They took 10 athletes, or they were just told to visualize that they are, you know, they are running faster in the track. Their muscles are moving. And there was just a group who was just told कि एक हफ्ते के बाद race है, be prepared. Surprisingly, guess who won? Number one group or number two group? Show me with your hands. What do you think? Of course, right? Has to be one. And why do you believe that? Because you've experienced it right now. You've seen the power of your mind. ये तो बस एक घूमने में था. Imagine if you can just imagine opening the door of the Lamborghini and sitting inside of it. Is it achievable or no? It is. Yes. Yes. Will you guys do it every morning? Nah. क्यों करूंगा? Lamborghini मेरे को बस चाहिए. Will I think about it? No. पर प्रॉब्लम्स के बारे में हर इंसान सोचेगा. Now you know why your problems are आते रहते हैं. Because you always keep thinking about the problems. If you think about the solution, if you tell your brain कि अर्नव क्या है? Why is life like this? तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा? क्योंकि तू ऐसा है, इससे तेरी लाइफ ऐसी है. If I tell my brain, Arnav, how can I make my life better? What do you think it will tell? Power of the subconscious mind. Right? So the next thing, or the most powerful thing I could teach you today, is ask your mind better questions. Right? अगर if I want to lose weight, और मैं खुद को बोलूंगा अर्नव, how do I lose weight? मेरा दिमाग क्या बोलेगा? कम खा, जिम जा. और वो होता नहीं है. Because that, what is that? You get more frustrated. I'm like, ये क्या आंसर है? कम खा, जिम जा. मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते हैं. But if you ask your brain, Arnav, I want to lose weight. I go to the gym. What can I do next? It'll tell me, go search on Google the workouts I can do. Go find a trainer. Go get a nutrition plan. Hit the gym 5 times a week. Baki 2 दिन do some therapy, chirotherapy, ये therapy, वो therapy. If you tell your brain, कल सुबह उठ के trading करना है, दिमाग क्या बोलेगा? Okay. If you tell your brain, कल सुबह उठ के trading में profit कमाना है, कैसे कमाऊं? तब दिमाग क्या बोलेगा? थोड़ा research कर ले अर्नव. थोड़ा जो इतना सीखा था उसको थोड़ा reality में लगा. कुछ भी बोल रहा हूं या समझ में आ रहा है? Right? हमारा ब्रेन होगा इतना छोटा, but it's the most powerful machine in your body. And if you apply that brain with your physiology, जैसे जिष्णु बैनर्जी एकदम नहीं कर रहे हैं, ऐसे एकदम सोते हुए देख रहे हैं. Right? अगर आप एकदम सीधे बैठे हो, if you're just like, ready to kill it, my mind is there. I'll ask better questions to myself. I'll be positive no matter what. कोरोना आया, आप लोगों की लाइफ रुकी. You must have faced problems which could have been very major, but you're still here, right? 2 साल हो गए, you're still here. Same with your love life. गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, you're still here with me. Ask yourself the better question. मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मैं कैसे फिक्स करूं? Instead of telling मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, full stop. Never be stuck in the past. Right? Because right now, right here, you are with me. There's no problem around you.
लुक एट योर लेफ्ट, लुक एट योर राइट. कौन सी कोई प्रॉब्लम दिख रही है? तुम्हारा बेडरूम दिख रहा होगा, हॉल दिख रहा होगा. द प्रॉब्लम इज इन द हेड, which is created by you. Parijat, I see you yawning, my friend. Right? It's all the mindset. It's all your physiology. It's all that smile. Problem आ रही है, आ जाओ. Let's fight it. कि प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ ठीक है मैं फेस कर लूंगा, आ जाओ मेरे को मारो. It's about how you face your problems. The better questions you ask, the better answers you get. Let me tell you a quick story. There's an old man, एक बूढ़े अंकल है, वो अपने घर के बाहर एक चेयर आती है ना जिसमें ऐसे आगे पीछे होता है, वो चेयर में बस ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं. उनके साइड में उनका एक कुत्ता लेटा हुआ है, गोल्डन रिट्रीवर, एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर, अच्छा वेरी गोल्डन हेयर, लेटा हुआ है. एक लड़का उनके घर के सामने से चल के जा रहा है. इट्स अ विला के बाहर बूढ़े अंकल ऐसे अपना चाय पीते इज रॉकिंग हिज चेयर. जब वो लड़का जा रहा है, वो जैसे ही वो घर के पास आता है, वो कुत्ता रोते रहता है. द डॉग इज क्राइंग, वो मोन कर रहा है. और वो लड़की को समझ में नहीं आता कि वो कुत्ते को कोई मार रहा है नहीं, कुछ हो रहा है नहीं, और वो ओनर भी कुछ कर रहे नहीं है, वो तो आराम से अपनी चाय पी रहे हैं. ये क्या हो रहा है? तो वो छोटा सा बच्चा जाके अंकल को पूछता है कि अंकल ये कुत्ता ऐसा रो क्यों रहा है? क्योंकि वो अंकल बोलते हैं क्योंकि वो वहां से उठ रहा नहीं है. वो बच्चे को समझ में नहीं आया, उठ रहा नहीं है, वो तो अच्छा लेटा हुआ है, फ्लोर एकदम ठंडा होगा. तो वो पूछता अंकल मेरे को समझ में नहीं आया. वो अंकल बोलते हैं वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उधर नीचे एक थॉर्न है, एक कील है जिससे उसको वो चुभ रहा है. वो बच्चा पूछता है कब से है वो कील? वो बोलते हैं 1 महीना हो गया. तो पूछता है बच्चा अरे वो दर्द हो रहा है तो फिर वो हट रहा क्यों नहीं है? वो अंकल बोलते हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है इन द पेन, कि वो कुत्ता भूल गया है ऑल इट टेक्स फॉर हिम टू बी हैप्पी इज टू जस्ट गेट अप, मूव थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट. बट हमारे इसमें लाइफ में पेन इतना कंफर्टेबल हो गया है, बस वो कुत्ता वहां पर ही बैठा है. चल इससे अच्छा मैं रो लूंगा, जब खाने के लिए बुलाएगा तब उठ के चले जाऊंगा मैं, जब मेरे को कोई ऐसा प्यार करने आएगा तब उठ के चले जाऊंगा मैं, जब मेरे को प्रॉफिट दिखेगा ट्रेडिंग में तब उठ के चले जाऊंगा मैं. पर हम ये नहीं सोचते कि वो जो हम पेन इतने टाइम से एंड्योर कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट अप एंड मूव. आप पेन से इतना कंफर्टेबल हो गए, आप अपने प्रॉब्लम से इतना कंफर्टेबल हो रहे हो, आपने ठीक है प्रॉब्लम है ना, होने दो. डू आई मेक सेंस? गिव मी अ यस और अ थम्स अप. How many of you are very comfortable in your problems? Be honest. Give me a thumbs up. Sabhi. If somebody tells me no, भगवान हो तुम, मेरे को भी सिखा दो कुछ please. Right? But I can tell you one thing. All it takes is your matching your expectations from your self-worth. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? Do you want to settle for less? Or do you want to become bigger in your life? अगर आपको सेटल होना है for less, if you want to be an average person, or do you want to be a great man or a woman? If you want to be a great man or a woman, आप उठ जाओगे वहां से और हिल जाओगे. और अगर आप एवरेज हो, आप बस वहां पर ही बैठे रहोगे. ठीक है पेन हो रहा है ना, मैं रो लूंगा, मैं सोचते रहूंगा कि हाँ चलो मेरी बड़ी गाड़ी कब आएगी, मेरा बड़ा घर कब आएगा, मैं मम्मी पापा को यहाँ से वहां कब घुमाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सट्रावेगेंट लाइफ कैसे जियाऊंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, मैं खुद के लिए कितना कर पाऊंगा. अगर आप वो कील के ऊपर बैठे हुए हो, माय फ्रेंड, यू आर जस्ट वन मूव अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ.
your mindset. Ask better questions. Write down these 3 things. Ask better questions. Move with energy. Move with a smile. Don't be average. कील में मत बैठे रहो. कुछ प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी रहने दो. All you have to do is move. And by move I mean think. ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूं? ओ, अर्नव ने मेरे को कुछ सिखाया. Ask better questions. मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं. Don't ask this question कि अरे why am I not able to earn money? आपका दिमाग क्या बोलेगा? क्योंकि तू बुद्धू है. But if you ask मैं पैसे कैसे कमाऊं, तब आपका दिमाग क्या 10-15 एक 4 आंसर्स तो दे दिया होगा. ये कर, ये कर, ये कर, ये कर. एक आंसर तो दे दिया होगा, ये कर ले मेरे भाई. राइट? आस्क बेटर क्वेश्चंस. क्योंकि आप जैसे अपने हिसाब को क्वेश्चन पूछोगे, आपको वैसा आंसर मिलेगा. किडनी बेचने को कहता है. चलो, that's also a nice thing that your brain is telling. Right? But you get my point. If you do, just give me like a thumbs up. I'm pretty sure 90 लोगों का तो नहीं बोल रहा होगा किडनी बेचने के लिए. दूसरे की ब्रो, मैं डॉक्टर हूँ. We have doctors also इसमें, क्या बात है. अच्छा, दूसरे की बेच दो. Right? Guys, let me tell you one thing very seriously. If you guys are here, trust me, you're here to make great things happen. Right? Because it takes guts. पैसा छोड़ दो. Leave money, leave everything. You know how we were talking about एक गरीब इंसान super rich बन गया. He's a billionaire, millionaire. Not because he had money, because he had guts. He had that will. उसको कुछ बनना था लाइफ में. And if you're here, I want you to be happy that you know you're on the right path. आपको लग रही होगी कि अरे लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रही है, मैं इतने करोड़ों रुपए कब कमा लूंगा, when can I make my family proud, when can I make myself proud. Guys, if you don't celebrate yourself right now, trust me, मैं आपको कुछ भी दे दूं ना, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने से ज्यादा खुश नहीं रहोगे. क्योंकि you haven't solved your head. Sir, repeat the 3 lines, please. If anybody has written it down, please write it in the chat now. Fuck, confused हो गया मैं, क्या बोल रहा था. What was I talking about? Guys, what was I talking about? अभी literally अभी क्या बोल रहा था मैं? Guts, correct. Right? It's about आपका will power कितना है, आप कितना सीखना चाहते हो. Not just training. Train your body. We were talking about confidence, right? किसका confidence कम है, किसका confidence ज़्यादा है. Guys, confidence is something आप जिससे पैदा नहीं होते हो. Confidence is a muscle. आप जिम जाके मसल बनाते हो. Confidence तब आता है when you do something that is hard. Anybody can be confident in this room. Anybody. कैसे? By doing things that you think you cannot do. क्या मैं पतला हो सकता हूं? जिम जा, पतला हो, then see how confident you will be. Dress well. एक अच्छी सी टी शर्ट ला, ब्राइट कलर की, वो पहन जीन्स के साथ. If you're fat or thin or ugly, anything, instantly you'll be confident. Sit straight, give me a smile. Big smile, थोड़ी एनर्जी के साथ. Is this not confidence? Confidence is not about being sexy or being hot. How many times have we seen, like an average guy getting the hot girl? इतने बार. क्यों? Confidence. The way that guy walks, the way that guy talks. उसके पास कुछ भी नहीं होगा, साला फिर भी कुछ भी बोल देगा. This happened with me. Gym thing.
joke about yourself, then no one can go there since you're above it. Exactly. क्या करना है लोगों से? आज वो तुमको बोलेंगे तुम ये क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग व्रेडिंग. जब तुम बन जाओगे ना करोड़पति, तब सब आके बोलेंगे भाई कैसे करा, प्लीज सिखा दो. Right? It's not about being there. It's about acting like you're there. Write this down. Act like the person you want to become, and you will become that. Apna time aayega. Fake it till you make it. Yes. Be before you become. Write down. Be before you become. क्योंकि सोचो जो भी स्लम से उठ के आता है उसने तो वो जिंदगी भी कभी नहीं देखी होगी अमीरों की. He just thought he is that. He just thought he can be that. अगर that is not your fire ना, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा. That's why be. Imagine करो आपका best version of yourself, the richest person of yourself, the happiest person of yourself. अभी कैसा बैठा रहेगा? Will he just sit on a chair or will he be like very relaxed, ekdam confident? How does the best version of yourself look right now? Please write it down. How does the best version of yourself look right now? Imagine all the things that you've already got. How would that Arnav feel? How would that Chirag feel? How would that Jeet feel? How would that Gagan feel? How would that Ulhas feel? If you've got everything in your life right now, how would you feel? Would you feel, oh fuck, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? Would you feel भैंचोद ये क्या, oh sorry, would you feel ये क्या problems आ रहे हैं मेरे साथ? Or are you super happy? कि damn dude, what a life. I cannot, go to sleep tonight. 1 घंटे की नींद में भी you'll wake up क्योंकि the next day is going to be so amazing. If you've written it down, give me a thumbs up and like a yes in the chat. Imagine, Simran, you wake up the next day with everything you've got. How would you feel? Would you feel कि अरे क्या life है ये? Or would you feel, let's go out there and do something? Exactly. And imagine, you haven't even got that, you can still feel that energy of confidence. You can still feel that motivation कि हाँ मैं life में कुछ उखाड़ सकता हूँ. Yes, no. Right? It's about first be and then you will become. Act like you're already rich. Talk like you're already rich. Behave like you're already rich. तभी तो जाके बनेंगे. Think like you're already rich. A rich man कभी, नीचा नहीं सोचता. कभी ये नहीं सोचता कि अरे मैं चलो उसको दबा दूंगा. Even though it happens in business, but trust me, that is like a very wrong way of doing business. Mentally, वो लोग, they struggle a lot. Because karma is a real thing. What you give is what you get. That is life. Everything in life is, आप कुछ दोगे तब कुछ आएगा. आप पैसे दोगे खाना आएगा. Right? So think like a rich person. Think like a good person. Rich to ठीक है. Forget rich. Think like a confident man or a woman. Think like the man, who can conquer the world, or the woman. And if you can think that right now, you're already visualizing it. Like the rubber band thing. अगर आप every day ये सोचते रहोगे ना कि I'm the best, I am the best, I am the best. Imagine up 30 days, every day in the morning, instead of first sitting on your commode, you go to the mirror and tell, I'm the best. कितना भी बुरा दिन रहने दो. Trust me, start it from tomorrow. 30 days. No matter what is happening in your life. बेघर भी हो गए हो. फिर भी एक mirror ढूंढ के बोलो, I'm the best. And 30 days later, come and tell me how you feel. 30 days later, you may have found a solution.
30 days later, you may have just been in the same house or the same person that you thought was lost. How to differentiate between acting and daydreaming about these things? Sir, daydreaming is something that you don't feel while you're doing it. Acting is when you're in the, क्या बोलते हैं? In the character. When you feel it. Daydreaming आप बस सोच रहे हो. कुछ अंदर कुछ नहीं हो रहा, body ऐसी एकदम ढीली है. Acting is when you get up straight. Acting is like when you walk like a rich guy. Acting is when you're happy and smiling even when you don't feel like smiling. Right? कितना भी बुरा दिन हो दो, I had the worst of the day today. But look at me. If there's a reason to cry, there's a reason to be happy also, right? If there's a reason to cry, there's a reason to be happy. Yes or no? Or like, beach ka kya to be, whatever. Guys, you are what you believe. You always have a choice. And it is your choice to think if you have a choice or no. Write it down. You always have a choice. And it is your choice to believe if you have a choice or no. Samrat says, makes so much sense. Yes, buddy, I'm with you. I acted like this several times and it felt like you're on the top. Guys, it works. Imagine doing this every day. Imagine doing it when you're at the... Guys, problem ये है ना. सोचो हम एक problem के through जा रहे हैं, ठीक है? We do something and our life starts to get better. जैसे ही वो better होती है ना, हम सब चीजें छोड़ देते हैं जो भी हम करते थे to make our lives better. Yes, no. Right? Because life is like a graph. आप ऐसे जा रहे हो, you're doing all the hard work. Working on yourself, working on your relationships. Life अच्छी होते जा रही है. जैसे ही आप full खुश होते जा रहे हो, आप सब छोड़ देते हो, then it goes down. Right? आप meditate करोगे, आप जिम जाओगे 3 महीना, बॉडी अच्छी हो जाएगी, 4th महीना छोड़ दोगे. यही होता है. विनीत, आप ही समझाओ ये लोगों को. Right? Consistency. आपको पता है पूरी दुनिया, the whole world moves 2 millimeters every year. आपको पता है जो आप लैंड में रह रहे हो, every year it's just moving 2 millimeters. अगर पूरी दुनिया इतना हिल रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन इतने हाई क्यों है कि कल सुबह मैं उठ के घनश्याम सर बन जाऊं, कल सुबह उठ के मैं विराट कोहली जैसा बन जाऊं, कल सुबह उठ के मेरे घर पे एक प्राइवेट जेट आना चाहिए, मेरे को लेके जाओ. Have those have a vision. Trade your expectations for gratitude. तब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. Write this down. Trade your expectations for appreciation. Trade your expectations for appreciation. Appreciate it. Everything is in the mind, guys. Everything is in the mind. I am repeating this again and again because I know कहीं ना कहीं 2-3 दिन का motivation रहेगा. 4th day you'll be like, fuck, मेरे life में क्या हो रहा है? Have you been there? Give me a thumbs up. Will you be there? Again, give me a thumbs up. Hello, Vineet, क्या हुआ? उदास होना है वापस 3-4 दिन के बाद thumbs up दे रहे हो? Right? We don't have to be there, guys. That's why everything that you're writing down, सुबह एक बार पढ़ लिया करो. Right? मैंने कुछ ऐसा मंत्र नहीं दे दिया कि आप जाप और suddenly हैरी पॉटर आके एक वॉन्ड घुमाएगा, boom, life ठीक हो गई. I've just given you actionable things to do for yourself. Anything in your life. खुद रहने दो, family रहने दो, health रहने दो, relationship रहने दो, पैसा रहने दो. Everything that you've written down will help you solve all of these things. Right? Take a fresh page, make
four columns. Write down health, write down family, write down career, write down relationship. Everybody. Four columns, write down health, write down career, write down family, write down relationships. Relationships include your friend and your girlfriend, boyfriend, whoever. Once you've written it down, rate yourself out of 10. Very true. Be truthful to yourself. ये आपको किसी को दिखाना नहीं है. This is something that you're writing it for yourself. Currently आप 1 में से 10 ये सब areas of your life में आप अपने आप को कितना मानते हो? Where you are. Health wise, physically, are you fit? Or do you keep falling sick? Are you fat? Are you very skinny? Health, career, relationship, and family. Rate yourself out of 10. Whenever you're done, just do like a thumbs up and tell me a hell yeah. Drop a yes in the chat, guys. Rate yourself 1 में से 10 in all these 4 areas of your life where you are currently. Let's see. Guys, hold on. मेरे को थोड़े और लोगों को देखने दो. I see Sanchit. I see Sampath. Shubham. Guys, if you can open your cameras and just wave me like a hi. Maybe I can wave you back and I can help you better. Right? So I guess all of you guys have written and rated yourself in all these 4 areas of your life. And you guys remember, we have written down 3 problems that you are facing currently. You guys have written, give me a yes, give me a thumbs up. Perfect. Your energy flows wherever your focus goes. Right? Abhi aap jo bhi room mein baithe ho, in your room, check anything that's brown in color. Check your room. Tell me anything that's brown in color. Brown. Register it. जितने भी चीजें आपको brown में दिख रही है, देखो. It could be your bed sheet. It could be your guitar. It could be your bed. It could be your pencil, your watch, your clothes. देख लिया? Now, if you can write it in chat, the things that you saw that were red in color. There are very few things that you can name that were red in color, or you will only name the things that are red in color because you are very aware about the surrounding that you are in. So you will only name the things that you remember, but not what you saw. Right? That is one. Second, the thing that I told you to see brown. आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी that are brown. And you have also seen the things that are not brown, but दिमाग में तुमने बोला ये brown का shade है तो इसको brown कर लेते हैं. Yes? No? Right? That's how your brain works. आप जो अपने दिमाग को बोलोगे ना मेरे को दिखाओ, वो दिखाएगा. ब्राउन कलर चाहिए था आपको, ब्राउन दिख गया. जो ब्राउन नहीं है आपने उसको भी ब्राउन बना दिया. Right? One more thing I want you guys to write down. See the things as they are, not better than it, not worse than it. And we are just like 15 minutes away from the session, guys. उसके बाद आप सब लोग जाके अच्छा अपना डिनर कर सकते हो. To the things that make you happy. Right? See things as they are, not better than it, not worse than it. गाड़ी पंचर हो जाती है, हम अपने दोस्त को कॉल करके बोलते हैं, ब्रो गाड़ी पंचर हो गई, लाइफ खराब हो गई, कुछ भी नहीं हो सकता. बट इन रियलिटी खाली हवा कम है. Right? This is just an example.
थिंक आपके लाइफ में ऐसा कहाँ हो रहा है जहां पे चीज ये है, या तो आप उसको बहुत ही अच्छा बता रहे हो या तो बहुत ही खराब बता रहे हो। उसके वजह से यू डोंट लिव योर लाइफ इन हैप्पीनेस, बिकॉज यू थिंक या तो मेरी लाइफ एकदम बेकार है, या तो यू थिंक अरे वो इतनी अच्छी है, वो है ही नहीं मेरे पास। व्हाट? अनिरुद्ध, right? So remember, we've written down 3 major problems in your life, and all the things, though आपके वो numbers of health, career and all that. I'll give you 5 minutes. I'll play some music. जो आपने 3 problems लिखी है, I want you to write solution for your problems. I've given you some 3 things, right? Physiology. पहले सीधा बैठो. I want you guys to have a smile on your face. आराम से breathe करो. Right? Second, think in your head that you are the shit. You are already rich, you're already happy, you have everything in your life. How would that Arnav feel right now? I like how Yasser is imagining those things while his eyes closed. If you're doing that, Yasser. Right? Imagine that. Sit straight, deep breaths, smile on your face. Think you are the boss of this world. And third, ask yourself better questions. You always have a choice. जो आपकी प्रॉब्लम है, हाउ कैन इट बी, डोंट टेल मेरी ये प्रॉब्लम है मैं इसका क्या करूं। आपका दिमाग बोलेगा बेटा बैठ के रो। टेल योरसेल्फ मेरी ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई सॉल्व इट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई कैन टेक, मैं क्या कर सकता हूं, क्या शुड आई गेट बेटर सो दैट माई प्रॉब्लम्स गेट इजियर, कैन आई मूव अप फ्रॉम द कील एंड मूव अवे। Guys, I'm giving you 5 minutes. Please write it down. Trust me, this will help you a lot. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. Guys, smile. Don't forget that smile on your face. Don't forget that energy. The energy that you are. If you're breathing, there is something in you, right? You can move. You can do things. Think properly. Ask yourself better questions. Ye problem kyun? How can you solve this problem? What is the next step you can take? What can you do? Instead of ye problem mere ko kyun hai? I'm giving you 2 more minutes. If you want some 4-5 minutes more, please write it in the chat before we start. But with a smile on your face.
हंस के नहीं करोगे तो गरीब के गरीब रह जाओगे। मजाक कर रहा हूँ गाइस। राइट, सिट अप स्ट्रेट, राइट इट डाउन। Done, guys. If done, give me a thumbs up. If you're still there, give me a रुक जाओ sir, 2 minutes. Give me 2 more minutes. 1 more minute. ठीक है, let's give you guys 1 more minute. तब तक if you guys want to headbang with me, आप कर सकते हो. गाना ही खत्म हो गया. What? You have for takeaway, You have for takeaway, You have for takeaway. मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां टुटे दिल नू सांभी फिरदे अगर हो गया प्लीज ग्रूव लेट इट आउट 12 साल भजियां जराइयां छड्डे तख्त हजारे हर साह नाल याद तैनू करदे रहे कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां कहंदी हुंदी सी चन तक राह बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठां सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेंगी मेरी याद Hey, Vishnu, let's go. दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा चलो amazing. Are you done? Give me thumbs up. Write a yes in the chat. Yes. I want to see the chat spamming. नहीं तो फिर क्या ही है, तब से सब सो रहे हैं शायद.
बाकी वीडियो वाले तो मस्त है, उनकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। गाइस बीट्स पे नाच रहे हैं भाई, लिरिक्स पे नहीं। सैड सॉन्ग है ना। इमेजिन सैड सॉन्ग में आजकल आप नाच रहे हो, लाइफ भी सैड है, उसमें भी नाचो। क्या बात है दिविशित, वेल सेड राइट। गहरी बात कह दी। आहा। So I hope all of you have written. Did you guys find a solution, or are you still like bah, 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 bah? If yes, you found a solution, give me a thumbs up. आप मुंबई आ रहे हो अर्नव, आप बुलाओगे तो सर हम, आप वड़ा पाव खिलाओगे तो I'm coming. Sorry. Guys found a solution? Did you find like a sad solution? Did you find like a happy solution? Energy. भाई दुनिया की आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का आंसर मिलने के बाद भी हाँ मिल गया। Oh my God. Why aren't you celebrating? मैं तो आपको 2 दिन दिया, आप तो 5 मिनट के बाद ही आपकी लाइफ वापस नीचे चली गई। Bro, how long I've been taking this session? 8 o'clock we started. 9:30, 1.5 hour में gone. आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का आंसर मिलने के बाद भी। क्या ट्रेडर बनेगा रे तू? अभी भी कील में बैठे हो कि उड़ गए? उड़ गए तो गिव मी अ थम्स अप, गिव मी सम एनर्जी। यस, कुछ तो। तुम्हारे तो माइक भी बंद है, जितना भी चिल्ला लो। आई कैन तो नॉट शाउट, आई लुक लाइक एन इडियट। उठ के साइड में भी आ गए। Right? Can I take somebody on the call who wants to come on a call? Give me a hands up. चलो, मैंने आपको देख लिया। दिविशित, hello brother. Hello Arnav, hello. कैसे? How are you? I'm fine. How are you? It's a very good session. Thank you so much. Yeah, I'm glad that I could help. बताइए, how is like, were you able to find solutions to your problem? Yes, because the problems are very simple, which I have been complicating. तो वही अपने कर्म सुधारने वाली बात है। करेक्ट। मैंने आपको एक चीज लिखाई थी राइट, जो प्रॉब्लम है सी फॉर व्हाट इट इज, नॉट लेस नॉट मोर। यस, जैसे आपने बोला प्रॉब्लम तो सिंपल सी थी, मैं ही दिमाग में सोच सोच के कि ये क्या हो रहा है। the process seems complicated, but it's not. इट्स नॉट, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। आप ये इमेजिन करो ना, किसी ने कुछ चीज पहली बार जिंदगी में इन्वेंट करी है। इफ somebody can invent something out of thin air, हमारे प्रॉब्लम्स को तो एवरीथिंग एज अ सॉल्यूशन, राइट? Yeah, necessity is the mother of all inventions, ना? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। किसी को लाइट चाहिए था, उसने कभी ये सोचा? अरे उसको तो ये सोचना पड़ता था व्हाट इज लाइट। इमेजिन हाउ कॉम्प्लिकेटेड दैट इज टू इन्वेंट अ लाइट बल्ब द फर्स्ट टाइम इट वाज इन्वेंटेड। और हम ये सोच रहे थे मेरे लाइफ में पैसे क्यों नहीं बन रहे। राइट? If somebody can think of producing electricity in a way that lights up the world, now does your problem seem big enough, or it's like, it's हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। बस it's about कि एक्ट करता रहूंगा तो ये कुछ भी नहीं है। करेक्ट, हमने हक दिया उस दिन सब। करेक्ट। So the final thing that I would leave you guys with is take massive and immediate action. डोंट थिंक। जितना सोचोगे ना कि अरे मैं जिम जाऊं, सडनली फोन में रील स्क्रॉल करने लग जाओगे, खाना खाने लग जाओगे, नहाने लग जाओगे। जैसे ही थॉट आता है मेरे को पतला होने, रन टू द जिम, वेयर योर शूज। राइट? सेम विद एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। डोंट थिंक अरे मैं कैसे कमाऊं। घुसो, सिट ऑन योर कंप्यूटर, राइट डाउन, गो टू योर मॉम, डैड, फैमिली, फ्रेंड, व्हाटएवर, पैसे कैसे कमाऊं। मिनिमम आई थिंक सबने यहाँ पे 10th क्लास तो पढ़ा ही होगा। मतलब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। थैंक यू सो मच दिविष्टि, सॉरी, तब से मैं आपको क्या ही बुला रहा हूँ। अरे कोई नहीं, मैंने 1 साल में मम्मी बोला था, मम्मी ने 3 साल में दिविष्टि बोला था, सो इट्स ओके। आई लाइक योर माइंडसेट बडी। बस ऐसे ही रहो, टेंशन ही नहीं है लाइफ में। थैंक्स। I hope you liked it, and I hope you'll just
take these things with you till the end of your life and just apply it whenever you have a problem. कभी भी प्रॉब्लम आती है ना, ये याद करो, अरे कोई तो ट्रेडिंग विद सिद्धांत के लाइफ में आके कुछ तो बोल के गया है. Right? I just come back to the book. Thank you so much. Anybody else who wants to share something? Give me like a hands up. Chalo. Jishu Banerjee. Yeah, hi sir. Hello, भैया sir मत बुलाओ sir. I'm one of you Yeah, guys only. I What know. is sir? Yeah. बताइए. मेरा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा जो नॉर्मली होता है वही है, जैसे कि माइंड फ्लक्चुएशंस वगैरह, तो उनका सॉल्यूशंस जो मैंने निकाला है लाइक मेडिटेशंस वगैरह आई हैव टू डू डेली रूटीन्स. एंड जो मेन प्रॉब्लम है लाइक I could find the actual environment problem to make like उसका कुछ solution पकड़ना है, उसी को business बनाना है. जैसे right like जैसे कुछ भी problems मुझे ढूंढना है वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए कुछ solutions मुझे भी चाहिए. right? guys, just raise your hands now. I'll get you up in the next question. And I'm Like taking these questions so that I can help everybody. You know, just listen what they are saying and listen what I'm trying to tell. Okay, give me a thumbs up. Huh. Like I could find like the environment problems जो है उसको मुझे solution देना है, वही उसी को business बनाना है. Simple Environment problems as in your family or your friends? No, like for the society, right? जैसे कि हर कोई जो स्टार्टअप्स है वो प्रॉब्लम से ही बना है. Correct. वो तो प्रॉब्लम से बना है, जैसे कि गाड़ी नहीं मिल रहा था उबर बन गया, Mm-hmm. होटल नहीं मिल रहा था ओयो बन गया. Mm-hmm. तो वही कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी चाहिए जो जिसको मैं बना पाऊँ बिजनेस. अच्छा, you want problems in your life? Yes, Oh. I want that. I want problems. अच्छा, you're trying to figure out आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है. Yes, yes, yes. तो आपने वो 3 चीजें क्या लिखी है? वही लिखा, माइंड फ्लक्चुएशंस, like not feeling energetic, like few days like I feel bored, like I feel. So how will you feel energetic? I should woke up at the morning, Mm-hmm. like I'm just woke up till whole night, and like I just sleeping at 4 o'clock 5 o'clock in the morning, and then और आपको क्या लगता है कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेट सोने का, फिर उठ के एकदम 90%. How many? 90%. There you go, you have a problem. Yeah. I gave you the solution also. Yeah, I mean, मैं तो नहीं दिया, आपने खुद ही दे दिया solution. जल्दी सो, जल्दी उठो. वही Next करना है. नेक्स्ट इसका एक और एक एरो मार्क डाल के ये पूछो कि जल्दी कैसे सोना है. नेक्स्ट एक एरो मार्क डाल के जल्दी कैसे उठना है. फिर नेक्स्ट एरो मार्क डाल के मैं क्या करूं इसको बिजनेस बनाने के लिए, ऐप बनाऊं. नेक्स्ट एरो मार्क डाल के मैं इसको ऐप कैसे बनाऊं, मैं कौन से लोगों से कनेक्ट करूं. ऐसे 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 ट्राई मेकिंग अ पिरामिड. Yes, that's what. चलो, अमेजिंग, हैड फन. अच्छा था सेशन. Thank you. बहुत अच्छा. Thanks to you for coming, friend. Yeah. Chalo, next, anybody else? We'll just do this very quickly. Oh, I see one guy, Sanchit. हाय भाई, कैसे हो? मैं ठीक, बढ़िया. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. मैंने पहला प्रॉब्लम अपना लिखा है प्रोकास्टिनेशन. तो मेरे को समझ में आया कि प्रोकास्टिनेशन मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना डेली का काम मैं डेली कर नहीं रहा हूँ, तो वो पाइल अप होते जा रहा है, फिर मेरे को वो करने का मन नहीं हो रहा है. तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हर दिन हमको आधा से 1 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा काम करने के लिए. तो वो डेली का काम होते रहेगा, फिर वो पाइल अप नहीं होगा, फिर अपने ऑटोमेटिकली काम होते रहेगा. इसको ये लिखो, कैसे करोगे ये काम. सॉल्यूशन तो बहुत आसान, सॉल्यूशन तो आपको पहले से ही पता है, उठ के काम करना. राइट डाउन हाउ, कैसे. दैट विल गिव यू, वो आपको करेक्ट सॉल्यूशन देगा. जैसे somebody very famous said, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. उसके आगे मेरे को नहीं आता. Right. चलो ठीक है. Thank you so much, Sanchit. Next, we'll just quickly take Pratyush. Pratyush ji, अगर आप वीडियो खोल दोगे, then I will talk. Otherwise, no talking to you. अरे मैं जीशु भाई को बिजनेस आइडिया दे रहा था. Okay. Anybody else? हम प्रत्युष से बात नहीं करेंगे जब तक वो वीडियो नहीं खोलेगा. अनिरुद्ध. हेलो भैया, कैसे हो आप? भैया. हाँ भैया इज नाइस.
आई एम गुड ब्रदर, यू टेल मी। मैं आपसे छोटा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बताइए। सो माय प्रॉब्लम इज लाइक दैट कि आई हैव अ सॉल्यूशन बट मैं उसको अप्लाई नहीं करता। जब मेरे पास मूवमेंट होता है मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। दैट्स द थिंग विद मी। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइक आई हैव अ बिजनेस इन माय टाउन, तो मेरा एक्सपोर्ट का काम है लगभग सारा। तो विद माय न्यू क्लाइंट्स में जब वो टचअप करता हूँ ना, मैं बात करने जाता हूँ तो मैं प्लान करता हूँ वैसा हो नहीं पाता। दैट्स द थिंग विद मी। प्लान एज इन आप जो मीटिंग प्लान करते हो वो आपके हिसाब से नहीं जाती? मीटिंग्स प्लान ओके बट ट्राइंग टू गेट विद द न्यू पीपल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आप न्यू पीपल लाने के लिए क्या करते हो? आई गो टू विद देम जो मैं पहले से कनेक्टेड है मेरे साथ में, उनके साथ मीटअप, उनके जो थ्रू में है उनसे मीटअप। दैट्स द थिंग। आर यू मीटिंग इनफ पीपल इन योर लाइफ? नॉट नाउ आई गेस। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? नॉट मीटिंग विद इनफ पीपल। या करेक्ट। सोचो आप ऐसे जमाने में जी रहे हो जहाँ पे यू कैन टॉक टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जस्ट बाय वन इंस्टाग्राम एड, या आई कैन। राइट? तो इज इट दैट यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन और इज इट दैट आप लेजी हो या आप थोड़े डरे हुए हो कि अरे बात करना? दैट्स द थिंग, लास्ट वाला पॉइंट है। डरे हुए हो? मैं लेजी नहीं, हाँ मैं लेजी नहीं हूँ। आई एम नॉट लेजी एट ऑल। आई वर्क 16 hours a day, so Guys, just stick around with me, right? Just 2 more minutes. I'll talk to you about trading also. So you're not lazy, right? You're just scared. nope. Yeah, देखो लोग मेरे हिसाब से तो जो चीजों के लिए scared रहते हैं when it comes to a business, yeah. fear of failing, fear of succeeding, right? एक तो fail of course because अगर fail हो गया तो क्या? Fear of success is oh shit, अगर मैं famous हो गया तो क्या? ये समझ में नहीं आता but it runs behind your head कि oh shit, I have to handle this, I have to handle that. Am I that capable of even becoming successful? ये तो पर फेमस होने के बाद हिट करेगा ना। हाँ हिट तो करेगा पर दिमाग में तो समझ में आ जाता है ना, हर चीज हिट होने के लिए नहीं होती है। That's the thing. Right, Anirudh? So your fear Yeah. is stopping you. I cannot see you. Where are you? Did he leave? No, he's not talking also. I think वो निकल गया। Anyway, जादू। How to tackle fear of failure in any aspect of your life, guys? See for the problem as what it is. चलो मैं कुछ भी नहीं बोलता, 3 चीजें जो मैंने आपको अभी करने के लिए बोली आप करके अपना fear निकाल सकते हो, yes or no, right? If you're still asking me how to tackle a fear, hello, 1.5 hour में तो क्या ही बोल दिया फिर मैंने। Shit, do I have to take a session again? Right? I want to know how you're feeling. Problems तो ठीक है, I know it's there. The solution is massive action. The solution is, life feels good, let's solve it. Right? Coming to trading, since all of you have joined this for trading, right? Trading में 3 main चीजें what I think अभी के लिए तुम्हारे साथ फेस होती है, या usually people think is they try to get rich too quick. Try to get rich too quick without learning. सोचो अगर मैं कोहली को क्रिकेट भेजा विदाउट इवन उसको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं, क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं। हम तो यहाँ पे टीवी में देख के बोलते अरे ये बॉलिंग ऐसा डाल रहा है, वो ऐसा घुमा दिया होता तो 6 लग जाता, बट व्हेन यू आर देयर कुछ समझ में नहीं आता। राइट? एक्सपेक्टेशंस, appreciation. देखो सपने बड़े देखो, think about all the things you want to have, but when you think not trying to get rich too quick, थोड़ा ना, या तो you don't get sad about it only, समझ रहे हो? Expectations मत रखो, ठीक है मैं रिच नहीं हुआ कल तो क्या, let's try another day, let's try another day. Can I learn better? Can I learn more? Feeling afraid before trading, मेरे पैसे चले जाएंगे तो क्या? डर किस बात का है? You know how a trader's life is. अब धोनी ऐसे थोड़ा ना जाता बैट करने, अरे मैं अगर 0 में आउट हो गया तो क्या?
Imagine that guy in the biggest IPL finals of the world, जहाँ पे 2.5 crores people are watching. He got out in the first ball. First ball. He's Dhoni. Puri dunya, nobody's cheering for CSK. Everybody's cheering for Dhoni. Is he a bad cricketer? Is he a bad captain? No, right? Because one step does not dictate your whole career, your whole life. एक बार लॉस हो गया तो क्या, प्रॉफिट भी तो हुआ था, है ना? ट्रेडिंग इज it's a chess. One second, I'm not able to see the chat. काम करते रहो, फॉल की चिंता मत करो. Exactly. अगर आपका माइंडसेट कैसा है, बिफोर ट्रेडिंग अप्लाई दिस 3 things that I tell you. A smile on your face, a straight back, think you're the shit, and ask yourself the right question. And you know, if you're anything that doesn't grow dies. That's how life is. अगर पेड़ नहीं उग रहा है वो मर रहा है, right? Something it's either it's growing or it's dying, right? Keep learning. Write it down. If you're not growing, you're dying. If something is not growing, either it's growing or either it's dying. क्या गैम्बलर बनेगा रे तू? सरकाजम. इसमें क्या सरकाजम है? Does somebody say that? हाँ. Okay. वो डालो. अच्छा, okay. Guys, today I've given you some bullet points. अगर आप अपने दिमाग में ना, if you just keep it in your head, if you go to the mirror every morning and tell you're the shit, मैं best हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, I am handsome, I am beautiful, I'm charismatic, I can do it. 30 days, 30 भी जान दो, 10 दिन करके देख लो. Homework, 10 days, go to the mirror and tell all positive affirmations to yourself. I am the best, I am handsome, I am charismatic, I am smart. If you're a girl, tell I'm beautiful, of course. 10 days. And if you feel better after the 10 day, सिद्धांत को बोल दो. कभी अगर सिद्धांत के साथ कभी लाइव में वापस आए कि सिद्धांत सर, ओ माय गॉड, अर्नव ने कुछ बोला था, इट्स वर्किंग, वो मेरे को बोल देगा. Or you can find me on Instagram. Right? Third problem, want to be right always. हम सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो ही सही है. रोनाल्डो खेल रहा है और वो बॉल ऐसे ही मार दिया. He's not going according to the plan. He's not going to what he's learning. आप हमेशा सही नहीं रह सकते हो. You'll always find somebody who's smarter than you, but don't believe that you're lesser than any person. समझ रहे हो? वो आइंस्टाइन है, वो बहुत स्मार्ट होगा, बट वो आपसे तेज नहीं भाग सकता. Does it make him a better human being? कुछ ही नहीं ना, इसके कोई वो नहीं है. You cannot tell if somebody is better than you just because he's Elon Musk. Elon Musk was also somebody before he became something, right? Be before you become. If you think I am Simran Pal, the next whatever, you will be that. If you think you're the next Sampath Das and not the next Steve Jobs, you will be that. If you think you're the next Manav and not, Michael Jordan, you will be that. You don't want to be Michael Jordan. You don't want to be remembered as someone else. आपकी खुद की legacy है. You have your own brain. You are smart. Don't ever think you're dumb. Don't ever think you're not good enough. अगर आप सोच लिए, that is who you are. You always have a choice. And we feed into the negative because लोग हमको ये बोलते हैं, especially the one who are close to us, family, friends. अरे तू नहीं कर पाएगा, बुद्धू है, छोड़ दे. You cannot do it. Like Anirudh, you can do more phone calls because you're a hard worker, man. I see that in you. You work 16 hours a day. You can make 10 phone calls more. Google kar.
more businesses around me. Where can I call? Ask yourself, what can I do? Where can I call? Am I doing more? I'm so happy that you're aware कि आप ही वो extra step नहीं ले रहे हो. If you have that awareness कि I am only not doing this, boom, your life will change. If you start blaming यार ये पैसे के वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है. Always think the rich got rich not because of money, but because of the resources. Sorry, resourcefulness. It's not the resources, about resourcefulness. Jugadu. That is why Indians are smart. If you see, most CEOs in the world are Indians. Why do Americans or all these people hire Indians? हमको आता है, काम निकालना आता है. पर हम ये वहां पर ही फंस गए ब्रिटिशर्स के जमाने में कि हमारा दिमाग ही उतना हो गया. Think more of yourself. Nobody is better than you guys. Nobody. ना ही तुम्हारे मम्मी, ना ही तुम्हारे पापा, ना ही तुम्हारे कोई अमीर रिश्तेदार, ना ही कोई. किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है. Only you know. And if you can think big for yourself, if you can smile throughout all the problems, can you fail? You can't. Avengers में देखा है ना वो ऐसे ऐसे करता है अपना क्या, what was his name? Doctor Strange. Last minute tries to find all possibilities. Same with you guys. कोई chance ही नहीं you can fail, guys. एक कुछ तो कुछ निकलेगा. You know it in your heart. ये सब चीजें मैं जो बोल रहा हूँ आपको सबको पता ही है, right? I'm not something ऐसा voodoo कुछ नया. All of this you know. It's in your heart. It's in your soul. It's in your mind. It's in your body. हमारे परदादा के परदादा के परदादा करते आ रहे हैं ये. Imagine your lineage, आपके ancestors आपके लिए इतना लड़े for you to stay alive and think कि अरे मैं तो एकदम बेकार ही इंसान हूँ. What? Guys, if they can fight in wars, you can fight for your life. आपको किसी के लिए नहीं लड़ना है. ना ही कोई टाइगर आके आपको मारने वाला है, ना ही कोई सिपाही आके आपको मारने वाला है. Right? Same as with trading. Shanti. Learn to calm your mind. Trade लेने आपके जब trading, I think it starts at 9 o'clock. 9:15. 8:45 आके बैठ जाओ. एक स्माइल रखो बस मुंह में. Be confident. Make a strategy. Think what I'm going to do. फिर ट्रेड लो. Problems सबके लाइफ में. I'm not telling you will never face problems. But I can tell you, if you apply these things now, you can solve your problems. And what is more important? Solving your problems. Problems तो आते रहेंगी. Problem ऐसी भी आएंगी, अब मेरे चोट लग गई. जब आप कभी भागते भागते गिरते हो, आपको चोट लगती है, आप अपने चोट को ऐसे देखते हो क्या? Ouch! तू कब ठीक होगा? तू कब ठीक होगा? Do you ever do that? Right? You just let it be. वो खुद ही हील हो जाएगा. Don't always keep pressurizing yourself. ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम. अच्छी सी बुक निकालो, लिखो. ये प्रॉब्लम है. Somebody called Arnav told me to do 3 things. Put a smile, sit straight, think I'm the shit, and how, कैसे, क्या, ऐसे, keep making ऐसे, pencil, pointer, ऐसे web बनाओ. If you don't solve a problem, come text me, tell Siddhant. He'll tell you how easy it is. How he क्या तुमको खुद ही पता है. Yes, no. Can you solve your problem? No matter how big, no matter how small. जो problem है उसको problem जैसी देखो, right? And all this that you've learned today, apply it for your trading as well. Apply it for your journey as well. जैसे starting में मैंने बोला था ना, it's not just about sitting in front of a computer and thinking अरे trading है, दिमाग में पर ये चल रहा है, मम्मी ने खाने में ये बनाया, अब्बा क्या खाऊं. ये चल रहा है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है. I haven't made enough money. I haven't made enough that. This person is mad at me. I am mad at that. जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना, कर दो. Get up from that nail.
जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, टेक टाइम एंड सॉल्व इट. Right? So guys, that's it for today. If you've guys, अगर आपको थोड़ा भी, if you've learned something, my only hope would be, to always have a smile, be better at what you're doing, never think less of yourself. जो भी होगा life में, you will figure it out. Right? And trust me, if all of us are here, उखाड़ लेंगे हम, हर सपना पूरा कर लेंगे. ज्यादा मत सोचो, खाओ, आराम से सोने जाओ. Solve your problem. Don't sit in the nail. Get up, move, figure out. Everything is figure outable. Write this down. Everything in life is figure outable. कभी भी ऐसा लगता है ना, क्या लाइफ है समझ में नहीं आ रहा, उसको देख लो. Everything in life is figure outable. It goes back to the same thing. Ask yourself better questions. Bas, because all we are doing is asking ourselves better questions. All we are doing is focus. Wherever focus goes, energy flows. If you've written it down or no, लिख लो. जो हमने ये exercise करा था, see the brown. Right? You will see the brown. अगर आप पॉजिटिव में नेगेटिव देखोगे ना, इतनी चीजें मिल जाएंगे. अगर आप नेगेटिव में पॉजिटिव देखोगे ना, इतनी चीजें मिल जाएंगे. हर प्रॉब्लम अपने साथ उसको सॉल्यूशन लेकर ही आती है, बस हमें उसे समझने की देरी है. ट्रू. How do you think scams happen? Everything has a loophole, guys. Any system, कितना बड़ा लॉ रहने दो, बैंकिंग सिस्टम रहने दो, कुछ भी रहने, सोचो टैक्सेशन. Nobody pays tax. Even if you are, you're not paying as much as you're supposed to. Everything has a loophole, right? So thank you so much. Stay happy. And just always think you are the shit. You are the best. You got this. Life is easy. Aram se karo. Make a lot of money in trading. Tell yourself, I can do it. मैं कमा लूंगा, मैं कर लूंगा. Don't be afraid. Right? Stay focused. Listen. Suno. Research karo. Keep growing. And give me a nice thumbs up with a smile. Let me take a photo. 1 second. Guys, अगर कैमरा है प्लीज खोल दीजिए. 1 second. Can we play a song and make you guys do like a nice photo? कोई अच्छा गाना बोलना सिद्धांत. किस चीज के लिए? ऐसे ही डांस करने वाला. Guys, कुछ एक अच्छा गाना बोलो जल्दी. We'll have like a nice close-up session. चिकनी चमेली. Guys, one song, quick. हम तो calm down. नहीं, हिंदी गाना, अच्छा हिंदी गाना. English तो I can play, no problem. Tell me a nice Hindi song. ढोली तारो ढोल बाज. चलो यार, तुम लोग क्या थोड़े अच्छे गाने तो बोल दो, नहीं तो कुछ भी बजा देना पड़ेगा यहाँ पे. जिंगाट नो. चलो बेस्ट. कब से सुनती आ रही हूँ. ये क्या हो गया? है ये तो है ही नहीं वो. दिस वन नहीं. गाइस आई एम सो सॉरी. पूरा मोटिवेशन का तो एकदम स्कैम कर दिया मैंने 1 सेकंड में. व्हाट इज दिस? चलो कोई नहीं गाइस, गाना तो बज नहीं रहा है. बज गया. आएगा कब? अपना टाइम अच्छा नहीं, इस पे नहीं है, Spotify पे. रियली? ओह शिट. कोई नहीं, फोटो लगी.
Smile, guys, smile. Give me a smile and make a thumbs up. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, छोरे सब हार्ड. Thank you. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, लड़के सब साइक है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, लड़के सब साइक है. Thank you so much, guys. I will see you soon. Have a good night. And I hope you guys do amazing in life. Take care. Good night. हम भौके ना छोड़े, टीली लगा दे तू रॉकेट ले, चमका के रास्ते पे सीधा हम वॉकिंग ले छोड़े. पंगा ना ले तू नाल मेरे सारे खतरनाक वे, रह थोड़ा बच के हौली हौली किद्दां पाउंदे खलारे दे. शक्ल तो सीधा सादा जिहा लगदा पर हरामी भी बहुत मैं, गाने दे जरिए सब नु हर वारी अपा दे दिंदे शॉर्ट वे. अपना ही अलग ही वाइब है, अपना ही अलग ही जोन है, जगत ये पूछे के कौन है, लफ्जों की गोली सीधा बेटा ठोकते गेम अपना, इसमें पड़ते चौके छक्के, काम तमाम होगा बेशक बे गैंग अपना हार्ट बोलू छाती ठोक के तू बस भौंक पे. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, लड़के सब साइक है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. You know I got that vibe. Vibe है, थोड़ा सा साइड है, लड़के सब साइक है, छोरे सब हार्ड. इसलिए तो hype है. वाइब है ये मुंबई का चलोली के साथ आई गली गैंग आई लेके नशीला पदार्थ, बड़ी हलचल हर जगह बढ़ती खैरात, थक से बोलते आज इतिहास तो ये सुनने का नहीं तेरा मन होगा आज, करते करते मस्ती बना देते आग तो हिलाते जा सर को, अब रुकना नहीं है ये जहरीला फ्लो.